कि नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति. Nija Sarva Shakti. So Lord has put all his energy into the name. So Nam Nam Akari Bahuda Nija Sarva Shakti Tatrarpita Niyamita Smaranena Kala. So Bhagavan, Lord Krishna's name has all the energy, all the power. So if you have real faith in the name, then it can achieve miracles. It can do miracles. Lord Ramachandra ji, when he was crossing over the ocean, they wanted to build a bridge. So Nal and Nila, they devised a plan that will build a bridge. So they were floating the stones, but all the stones were going in the water, sinking in the water. But then they came with the idea. Let's write the name of Lord Rama. The stones started floating. Seeing this, Lord Ramachandra ji wanted to put a stone, but he said that I am Ram. Why do I need to put my name there? So everybody's stone with the Ram Nam were floating. So then Ramji said, I don't have to put my name because I am Ram myself. So when Ramji put the stone, what happened? It goes down. It sank. So seeing that, Ramji was surprised. And then Hanumanji was watching this. So Hanumanji was smiling at Lord Ram. So Ramji said, please do not tell anybody that stone which I put sank and everybody's stone floating. Hanumanji said, this has to be told to everybody. ये बात सबको बतानी चाहिए. क्यों? Everybody knows the importance of name. कहते हैं कि जिसको राम ने छोड़ दिया उसको कोई बचा नहीं सकता. आपने जो पत्थर को छोड़ दिया उसको कोई बचा नहीं सकता. तो purpose is that Lord Rama has or Krishna has invested all his energy in the name. If Krishna wants to save you, nobody can protect you. Nobody can kill you. And if Krishna wants to kill you, nobody can protect you. So that is why today is a very auspicious day. आज एकादशी का दिन है, बहुत सुंदर दिन है. एकादशी के व्रत के दिन हो सके उतना ज़्यादा भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए. You have to remember as much as possible Krishna. With that, we will read some important verses. Our Vedas have some pearls. You know pearls? Pearls are very precious gems. Pearls ढूंढने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? You have to go deep into the ocean. The more deep you go, better gems you get. If you are on the superficial level, you won't get the precious stones. You have to go very deep dive. Similarly, हमारे जो शास्त्र हैं, all our Vedas, they have a lot of knowledge. But if you want to real benefit of the knowledge, you know what you have to do? What is deep going in means? More knowledge. Not knowledge. Study very sincerely. You have to study. Insightful. Think over it. Meditate over it. One shloka you read, then you can meditate it for a whole day, 1 day, 2 days. Then you will know more about it. That is called as diving deep into it. And superficial, just you read once, leave it, never read again. You won't get much out of it. इसलिए भगवान के जो श्लोक है, all the shlokas, more we read, more we get out of it. एक ही श्लोक आप बार बार पढ़िए, आपको और you will remember more actually. You will learn more. So what we have a theme here is some pearls of Vedic wisdom for success in our life. हमारे शास्त्रों में बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान क्या कहाँ है? बद्ध पुस्तक में है. The problem is that we don't have time to read the books. We are very busy, everybody is busy. So what we will do is that we will extract some pearls and present to you as a gift. Because you don't have time, so if I have some time, we'll gift you some pearls, right? So we'll have some pearls of Vedic wisdom. So before we do that, we'll pay respect to Srila Prabhupada. Om Agnyana Timirandasya Jnananjana Shalakaya
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। So we read one shloka. There are various Vedic scriptures. Srimad Bhagavatam is one of the jewel of, or it is the summary of all the Vedas is there in the Srimad Bhagavatam. Every time we'll take shlokas from different scriptures. So today we'll learn something from Srimad Bhagavatam. Before we do Bhagavatam, we pay respects to Vyasdev ji and Naranarayan Rishi and Mata Saraswati. So there is a shloka on the screen, so you can repeat after me. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayamudiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatim Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Nishtaki. Hare Krishna. So we'll take one shloka from Srimad Bhagavatam, 7th canto. So here is the Srimad Bhagavatam, and Srimad Bhagavatam has 18 cantos, sorry, 12 cantos and 18 volumes. So here is the shloka from 7th canto. So here is the shloka. Can I request everybody to repeat after me? So shloka is on the screen. Shri Prahlad Vacha. Shri Prahlad Vacha. Kaumara Acharet Pragno Dharman Bhagavatam Iha Durlabham Manusham Janma Tadapi Adruvam Arthadam. So whole shloka is, I will recite for the benefit of all of us. Shri Pallad Vacha Kaumar Acharet Pragno Dharman Bhagavataniha Durlabham Manusham Janma Tadapi Adruvam Arthadam. So, Hare Krishna. So this shloka is recited by Prahlad. Prahlad is a great devotee of Lord. Prahlad was son of a demon whose name was Hiranyakashipu. Hiranyakashipu was brother of Hiranyaksha.
and Hiranyaksha was killed by Lord Vishnu. So, to take a revenge of his brother's death, Hiranyakashipu did a great austerity of Lord Brahma, and he asked various boons. I cannot be killed inside the house, outside the house, not in the daytime, in the night time, neither astra nor shastra, like various permutations and combinations. Almost he became immortal actually. But while Hiranyakashipu was doing tapasya, Indra Devta, he was worried because if Hiranyakashipu becomes successful, then he will take over the entire kingdom of Devi Devta. So Indra Devta tried to take revenge. So he abducted pregnant wife of Hiranyakashipu. Her name was Kayadu. And in Kayadu's womb was a little boy, baby. So Indra Devta wanted to kill the pregnancy of Kayadu. Why? Because he thought that this Hiranyakashipu is powerful and now his son is another power. So he wanted to kill the baby in the womb. While Indra tried to abduct Kayadu and kill her, at that time Narad Muni appeared there. Narad Muni is a great devotee of Lord. He asked Indra that why are you trying to kill the baby in the womb? आप ये बच्चे की क्यों हत्या करना चाहते हैं? So Indra said that this is the son of a Rakshasa, Hiranyakashipu, and he will be another demon who will give us more trouble. Narad Muni said that you do not know that within the womb of Kayadu is a great devotee of Lord, and you should not kill her. And then Narad Muni took care of Kayadu. And while Kayadu was pregnant, what did Narad Muni do every day? Read Srimad Bhagavatam to Kayadu. And the baby was within the womb of Kayadu. हाँ, माता के गर्भ में बच्चा है और नारद मुनि क्या पढ़ रहे हैं रोज? श्रीमद् भागवतम. और वो बच्चा माता के गर्भ से भागवतम सुन रहा है. ये बात सही है. जब भी माता प्रेग्नेंट रहती है तभी रोज भागवतम पढ़ना बहुत जरूरी है. वी हैव टू रीड होली स्क्रिप्चर एवरी सिंगल डे, बिकॉज when mother reads and hears the holy scripture, the baby within the womb is able to hear everything. This is true actually. When Parikshit Maharaj was within the womb, at that time he got darshan of Lord, because Mata was devotee. If mother is a devotee, then the child has the blessing. So, when Prahlad was within the womb, Narad Muni every day recited Srimad Bhagavatam to Kayadu, and Kayadu was wife of a demon. But the son became devotee because of the sanskar within the womb. So this Prahlad, right from the birth, was a devotee. And as soon as he came out, he had all the qualities of bhakta. So when this Prahlad was sent to the school of demons to learn the demon art of fighting and killing others, Prahlad was not interested. He was always interested in Krishna Bhakti. So here Prahlad, you can see in the picture, Prahlad Maharaj बैठे हैं यहाँ पे. Can you see? And उसके आजू बाजू कौन बैठे हैं? All are friends of Prahlad. And then in the school, Prahlad is teaching all his friends. देखिए, जैसा संग वैसा रंग. So Prahlad was son of a demon, but he became a great devotee. भक्त कैसे बन गए? संग से. नारद मुनि के संग से भक्त बन गए. नारद मुनि ने संग दिया उनको. भले बच्चा गर्भ में है, लेकिन संस्कार गर्भ में भी मिल सकते हैं. तो Narad Muni, as soon as he came out, he became a devotee, and then he was associating with other kids.
So all the kids became devotees. He didn't become a demon, even though all the sons were sons of demon. He didn't get that because the power of positivity is much higher than the negativity. So Lord Krishna, Lord blessed Prahlad, and Prahlad is teaching to his friends. What is Prahlad saying? Prahlad is saying, Kaumara charit pragno dharman bhagavatam durlabham manusham janma tadapi adruvam arthadam. Prahlad Maharaj क्या कह रहे हैं? Prahlad Maharaj is saying, Kaumar acharit pragno dharman bhagavatam. One who is sufficiently intelligent should use human form of life right from the beginning of the life to practice activities of devotional service, giving up all other engagements. तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे कह रहे हैं कि right from the childhood, right from the age of even 5 years also, our children should be trained in Krishna consciousness. क्यों? क्योंकि दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म इज वेरी रेयर. दुर्लभम मानुषम जन्म तद अपि अर्थ अध्रुवम. Although it is temporary, adruvam, it is meaningful because in the human form of life, one can perform devotional service. Even a slight amount of sincere devotional service can give complete perfection. तो प्रहलाद महाराज यहाँ पे क्या शिक्षा दे रहे हैं? He is saying that the human life is very rare actually. हमें मनुष्य जन्म कभी मिलता है? 84 लाख योनि में जाने के बाद. We get this human form of life after passing over the 8,400,000 type of species. 84 लाख योनि के बाद हमें क्या मिलता है? मनुष्य जन्म. मनुष्य जन्म में भी बहुत सारे प्रकार के मनुष्य हैं. There are different types of human beings. Some are born in Africa, some are born in Canada, some are born in America, and some are born in Bharatvarsha. Bharatvarsha is very special bhumi. There are all the holy rivers in Bharatvarsha. All the incarnations in Bharatvarsha. All the holy places, Bharatvarsha. Anything you say auspicious, Bharatvarsha. That too in a good to do family. Your parents are very good to do. That also you got a good education. So everything good. And that also on the top of that we are all healthy. कोई ऐसा नहीं कि कोई अपंग है, आँख नहीं है, कान नहीं है. So what is a rare permutation and combination? If you see out of billions and trillions of people on the planet, you have the perfect match. दुर्लभम मानुषम जन्म. तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जन्म बहुत ही दुर्लभ है. और ये दुर्लभ मनुष्य जन्म का क्या उपयोग है? What is the use of human life? Risha? Is this a human life for eating? No. What is the difference between human and animals? Who will tell me? Humans also eat and animals also eat, right? Some humans eat them meat. Animals also eat meat. Humans sleep. Do animals sleep? Yeah. Humans also sleep. Animals also sleep. Then humans have a partner. They also get married. They produce children. How about animals? Do animals have children? Yes, animals also have children. Then do humans fight? Humans fight, yes or no? How much? Lots. They kill one country, another country. And do animals fight? You don't know? Animals also fight, Bulls, there are bulls fighting, dogs fighting with each other, lions fighting with each other. So all the animals are fighting. So how are we different than humans? How humans are different than animals? Who will tell me? Do you know what is the difference between human and animals? You don't know. Very good answer. Anybody knows the difference between human and animals? मनुष्य और जानवर में क्या फर्क है प्रभु जी बताइए. हाँ,
हम बोल सकते हैं, कैन एनिमल्स टॉक? They can यस, talk, but only in their language. देयर We cannot, लैंग्वेज, let them understand करेक्ट कि करेक्ट, हम क्या कहना चाहते हैं. हाँ हाँ। लेकिन एक एनिमल दूसरे के एनिमल को समझेगा, समझा. टाइगर क्या बोल रहा है दूसरे टाइगर को समझ में आ जाएगा, है ना? सो एनिमल्स ऑल्सो टॉक, बट वी कांट अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स। सोचने की शक्ति और अपने आप को किसी के प्रति डिवोट करके. सोचने की शक्ति, या यानी ह्यूमन आर मोर intellectual, you want to say? Yeah, they can invent computers or something like that. Is that right? Anybody else? Difference between human and animals? कौन बताएगा? मनुष्य, who is better, human or animal? Animal is better, nobody is saying. Who is better, human or animal? Human. Why? We have intelligence and we can like I mean if I say spiritually, like we can serve Krishna and we will know easily, like and we can gain knowledge easily than the animals. Okay, very good, very good. Anybody else want to say? Very good, Prabhuji, thank you so much. Anybody else want to say how human is better than animals? Humans can read. Huh? Human, humans can read, very good, very good. Humans can read, yes, Prabhuji? Animals are very faithful, not humans. So that's also good. So he's saying animal is better than human. So humans and animals, there's a lot of similarities. But as some of you rightly said, that human are intelligent. Huh? Human form of life, we have got developed intelligence. And what is the use of this intelligence? This can discriminate what is right and what is wrong. Discriminate means to differentiate. Huh? We can live a responsible life. In the human form of life, we can ask these questions. What are the questions we can ask? We can ask the question, who am I? What is the goal of my life? Huh? Animal, can they ask this question? Huh? Who is God? Can I see the God? Can animal ask this question? No. Huh? Why do bad things happen to good people? Can animal ask this question? Human animals have a question. What is the animal's question? Where is food? Where is shelter? Animals क्या करते रहते हैं? They are always looking for food, right? Or one animal is looking for another animal, they want to mate and produce children. Or animal is looking for sleep, shelter. Or animal is looking for protection, making sure other animals don't attack. Is that right? So humans and animals, only thing which differentiates is the higher intellectuals, that what happens after death. Animals cannot have this question. Animals cannot ask this question that is there any God and what is the purpose of the human life, right? So this is the higher intelligence, and that is what is said by Prahlad Maharaj here, that we have this human form of life, Durlabha Manava Janma. Our life is very rare actually. So we should not use it like animals are using. Most of the time we go to work morning to evening, what do we do? So we get up early in the morning, take some breakfast, and then go to work, make some money, come back home, eat, watch some TV, and call some phone calls to India, check WhatsApp message, Facebook, and we go to sleep, right? So this is what our life is all about. So here Prahlad Maharaj is saying that Durlabha Manava Janma Labhiya Sansare. Right? So you got a human form of life which is very rare. Can one person take care of the two kids? Only one person. So that they can they, so Prahlad Maharaj is saying that. So Prahlad Maharaj further is saying to uh, his friends, he's saying that Sukham Endriyakam Madaitya Deha Yogena Dehinam Sarvatra Lavayate Daivad Yatha Dukkham Ayadnaha. So Prahlad Maharaj is saying that, my dear friends, can you read loudly for all of us? Prahlad Maharaj continued, my dear friends, the happiness perceived with reference to the sense object by contact with the body can be obtained in any form of life.
according to one's past fruitive activities. Right. So Prahlad Maharaj is saying that Sukham Endriyakam Daitya. Sukham means happiness. So आपके कोटे का जितना सुख है वो आपको मिलने वाला है. उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ भागदौड़ करने की ऐसी जरूरत नहीं है. समय से ज़्यादा और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता है. जितना आपके उसका मतलब ये नहीं कि यू डोंट वर्क, you do your work, but don't spend all your time in working like cats and dogs. So भगवान प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं कि happiness pursued with reference to sense objects by contact with the body can be obtained in any form according to one's past activities. He's saying further, such happiness is automatically obtained without endeavor, just as we obtain distress. कोई दुख मांगता है कभी भगवान से मुझे दुख दीजिए? Nobody asks for the unhappiness. कोई दुख मांगता नहीं है, लेकिन दुख तो आता ही है. आपके कोटे का दुख तो आना ही है आपको. जितना आपके कोटे में लिखा हुआ दुख है वो आपके नसीब में लिखा है तो आने वाला है. वैसे ही आपके नसीब में जितना सुख लिखा है उतना आने ही वाला है. तो सुख और दुख ये साइकिल है ना. प्रहलाद महाराज सिंह विल कंटिन्यू. यस प्रभु. But can't we reduce our distress means हम अपना दुख कम नहीं कर सकते? कैसे करेंगे आप कम? जैसे कि दुख क्या है आपके जीवन में? जैसे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम? कोई भी ऐसी चीज आ जाए कि जैसे हम आइदर स्ट्रेस में आ जाते हैं या तो हमें ऐसा लगता है कि दिस समथिंग हैपनिंग रॉन्ग विथ मी. तो वो अगर हमें कम करना है तो क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम भगवान का नाम स्मरण करें? वो कर सकते हो. और हमारे कर्म हम इतने अच्छे करें कि जो भी दुख आने वाला है या तो कोई बड़ा दुख आने वाला है या वो हम कम कर दें. देखिए आप सो व्हाट इज हियर ही इज आस्किंग इज दैट if you have some problem, if you do some good, will the problem disappear? So there is a separate quota. आपका दुख का कोटा और सुख का कोटा डिसाइडेड है. आप पुण्य करेंगे उसका मतलब आपने पाप किया है वो धुल जाएगा ऐसा नहीं है. आपका पुण्य का कोटा अलग है, पाप का कोटा अलग है. जैसे कि आपने बैंक में पैसे रखे हैं तो एक बैंक में रखे हैं पैसे, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल में पैसे, रॉयल बैंक में भी पैसे रखे हैं. तो रॉयल बैंक का हिसाब अलग है, मॉन्ट्रियल का हिसाब अलग है. ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ पे डालें तो उधर भी जमा हो जाएगा. ऐसा एक अकाउंट में एक ही जमा होना है. वैसे ही आपका पाप और पुण्य का हिसाब है. अगर आपने कुछ पाप किया है तो उसका फल आपको मिलेगा. आपने कुछ पुण्य किया उसके बदले पाप धुल जाएगा ऐसा हो नहीं सकता है ना. तो जीवन में दुख आएगा ही 100%. ऐसा कोई नहीं है कि जीवन में जैसे भगवान के साथ पांडव थे उनके जीवन में इतना दुख आया है ना. तो क्या है, भगवान राम जी खुद गए जंगल में 14 साल. तो भगवान को कुछ दुख ऐसा नहीं था. भगवान तो अपने दिखा रहे थे. लेकिन कहने का मतलब ये है कि हर एक के जीवन में एवरीबडी हैज अ कोटा ऑफ happiness and distress. You don't have to work hard for that. You don't have to hard. What hard means work like cats and dogs. Yeah, you work for 8 hours. You work for 9 hours, but not 16 hours a day. Some people do 2 shifts, 3 shifts. They have no ending. So whole life will be spent like cats and dogs. Then you will lose the opportunity to have high realization. What is the high realization? The enlightenment. मनुष्य जीवन में ही भगवान से संबंध बांध सकते हैं. और कोई भी जीवन नहीं है, कोई प्रकार का जीवन नहीं है जहाँ भगवान से आप मिल सकते हैं. Only in the human form of life we have this opportunity. That's what Shri Prahlad Maharaj is saying here, is that Durlabha Mahanava Janma. Once you lose this opportunity, may not you get that form again. Then you will have to wait for Choraishi Laksha Yoni, which will take 1 million or 10 million lifespans. You never know. So we should never lose this opportunity of human form of life. You see, in the last life also, I had parents, I had children. In this life also, I have parents and I have children. In the next life also, Shri Shri Gaudita, Shri Shri Sitaram, Lakshmi Bhagwan, Shri Shri Radha, Radha Sai, Shri Jagannath, Baladev Subhadra, Shri Giriraj,
So Prahlad Maharaj is saying that in every life you have family, बच्चे, बीवी, all every life continues. There is no end to this. You might feel like these are mera, but as soon as the body is finished, सब कुछ खत्म. So Prahlad Maharaj is saying that Durlabha Manava Janma. Cats and dogs also behave the same way. But you are given this special prerogative. That doesn't mean that we give up our children or give up our family, but we use it for Krishna consciousness, Bhagwan ki seva mein lagaye. Rather than using it for, can you see the picture? What is seen in the picture? What is the picture here? What do you see in the picture? Prabhuji, what do you see in the picture? A lady is polishing the cage. There is a cage and there is a bird inside the cage. Do you see that? And the lady is polishing the cage. The problem is that the lady is looking after the cage, but she is not ready to look after the bird. She is polishing the cage every day in and out, but she is not feeding the bird. So what will happen to the bird? Bird is going to die, huh? Similarly, we all are looking after our body very nicely, but not looking after the Atma. Atma is the real gist of our life. If there is no Atma, the body will decompose. है ना? तो आत्मा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. जैसे कि हम शरीर को खाना देते हैं, वैसे ही आत्मा को भी खाना लगता है. फूड फॉर सोल. व्हाट इज द फूड फॉर सोल? Food for soul is Atma becomes happy when it unites with Paramatma. जैसे बच्चा अगर माँ बाप से सेपरेट हो जाए तो बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन वो जब माता से मिलता है तो वेरी हैप्पी. Similarly, Atma will become happy only with union with Paramatma. And Paramatma is there in our body. भगवान हमारे शरीर में है, परमात्मा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? We do not have time to talk with Paramatma. That is the problem. We do not have time to realize. We look after our body. शरीर की सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, मेकअप लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कपड़े शॉपिंग करेंगे, लेकिन we have no time to spend for परमात्मा. So how do you unite with परमात्मा? परमात्मा से यूनियन कैसे हो सकता है आत्मा का? How आत्मा can unite with परमात्मा? We have to do chants every day, Mhm. like being involved in Krishna consciousness every day. Very good. That's वेरी गुड, वेरी गुड. सो यू हैव टू टॉक विद कृष्ण. जैसे कि आपका संबंध अपने घर वालों से बनता है क्योंकि आप बातें करते हैं उनसे. आप घर से बात करना छोड़ दें सबको. घर वालों से बात मत करिए कल से 1 महीना भर. आपका संबंध कट हो जाएगा. आपके इंडिया में कोई फ्रेंड है, उसको आप फ़ोन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? सब संबंध कट हो जाएंगे कि नहीं? किसी से संबंध कट करना है तो इजी रास्ता क्या है? उसको बोलना बंद कर दो, हो जाएगा कट. यस और नो? वैसे ही आपने भगवान से बात करनी बंद कर दी तो क्या हो गया? क्या हो गया? आपने सोच लिया कि मेरे को संबंध नहीं करना है भगवान से, तो ठीक है, सफर. इट इज योर चॉइस, राइट? सो हाउ डू यू टॉक टू कृष्णा? यू टॉक टू परमात्मा थ्रू द साउंड. एक्चुअली you can, sound is the only means by which you can talk. Actually, science also depends on sound. Sound is the original energy, or it's called Nada Brahma. What is the Nada Brahma means? The first energy which was ever created on the planet was the sound. Sound has a very powerful energy. When Brahmaji was born and Brahmaji was not knowing क्या करना चाहिए, तभी भगवान ने उन्हें गायत्री मंत्र दिया. So sound is the main energy. So how do you connect with Paramatma in your heart? So every day mantra meditation. भगवान के लिए मंत्र करना जरूरी है क्योंकि that is the sound. कुछ लोग ब्रीदिंग प्राणायाम करते हैं. There are so many gurus teaching breathing exercises, but breathing will not take you anywhere because it is still on the material platform. Breathing is for the lungs, pranayam is for the mind, but what about the soul? Soul has to be connected through the sound vibration to Paramatma.
If you keep on breathing for entire life, you will never feel happy because you will never get connected with Paramatma. So as long as you are doing breathing exercise, yes, your blood pressure will go down, you will feel better, your heart rate will feel better. But as soon as your breathing pranayam stop, what happens? You're back to square one. हाँ, लेकिन अगर आप भगवान से जुड़े हैं तो आपको कोई प्राणायाम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्राणायाम तो इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ 8 limbs ऑफ योगा. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान है समाधि. समाधि मीन्स यूनियन ऑफ आत्मा विद परमात्मा. लेकिन आप अगर भक्ति में लग गए तो ऑल एवरीथिंग 8 limbs ऑफ योगा इंक्लूडेड इन भक्ति इज द इजिएस्ट वे. यू कीप ऑन ब्रीथिंग एवरी डे इन एंड आउट. रोज सुबह शाम प्राणायाम करो, वजन थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन भगवान से नहीं मिल पाएंगे आप. इसलिए भगवान से मिलना है तो क्या लगेगा? साउंड लगेगा, साउंड वाइब्रेशन. विदाउट साउंड यू विल नेवर यूनाइट विद कृष्णा, आई गारंटी यू. इवन इन ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ यू कैनॉट यूनाइट विद समबडी एल्स विदाउट साउंड. है ना, जैसे कोई स्पेस में है तो क्या करते हैं? यू साउंड, यू कनेक्ट विद द साउंड. Sound is the main energy. So you use the sound vibration through mantras. Mantras are the basis of humanity. हाँ, पहले मंत्र से बारिश गिराते थे, मंत्र से फायर जलाते थे, because mantra has a power. Sound is the power of the whole thing. But we have forgotten the power of sound. So mantras are given to us by God. They are not ordinary sound vibrations. And one of the mantra which is, we have Om Namo Bhagavate Vasudevaya, we have Gayatri mantra, we have so many mantras, no? Mahamrityunjay mantra, so many mantras are there. Every mantras have special every mantras have special power. Now every mantra has special occasion also. You cannot recite one mantra at another time. So every mantra has significance. For example, Gayatri mantra. When do you recite Gayatri mantra? Some people recite anywhere, anytime. That is अपराध actually. गायत्री मंत्र का जब मंत्र करते हैं तो एक तो उसका क्वालिटी ये है, रिक्वायरमेंट ये है कि यू हैव टू बी इनिशिएटेड, दीक्षा. यू हैव टू हैव अ ब्राह्मण दीक्षा. सेकंड, सुबह प्रातः काल 4:30 से 6 के बीच में और पूर्व दिशा में, you have to face east. Then you have to have a shower, be very clean with mind and body. Then you recite Gayatri Mantra. Gayatri Mantra cannot be recited like that. You cannot take antibiotics for blood pressure. Antibiotics are required for infection and antihypertensives are for the blood pressure. Similarly, all the mantras have special utilities. So in the Kali Yuga, there is an Upanishad called Kali Santara Upanishad, which is given by Vedas, in which the mantra recited is Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this mantra is given to us by who? Not by ISKCON. Some people say it is ISKCON mantra. No, it is not ISKCON. It is given to us by Vedas ji in Kali Santara Upanishad. And then Chaitanya Mahaprabhu revealed it to all of us. And then Srila Prabhupada ji, one of the Sanstha. ISKCON is an organization. It is not a dharma. It is not a religion. It is an organization. Like a university. Lakehead University is a university. It's a Sanstha. So the Sansthas, what is the work of Sanstha? They give the facility. They are not the facility themselves. They are not the knowledge by themselves. Like engineering college, knowledge is given by so many universities. So similarly, this Mahamantra knowledge is given to us by Srila Prabhupada. Bhagavad Gita is given to us by ISKCON, by Srila Prabhupada. So by following this mantra, it doesn't mean that you give up your religion or you belong to a particular organization. But it is the process which has the results. Whether you go to Lakehead University or University of Toronto, you can become an engineer as long as you study properly. ठीक है क्या नहीं? वैसे ही अगर आप मंत्र का ठीक से ध्यान करेंगे
So you will be part of the whole process. So, Durlabha Manava Janma, what is Prahlad Maharaj saying is here that Sukhendriyam Daitya Deha Yogena Dehinam Sarvatra Labhyate Daivat Yatha Dukham Agyantah. So, सुख और दुख तो आते रहेगा. जितना आपके कोटे का सुख है आपको मिलेगा, कोटे का दुख है तो वो भी मिलेगा, उसमें कोई चॉइस नहीं है. ऐसा नहीं कि आपने कि यज्ञ किया और आपका दुख खत्म हो गया, ऐसा कभी होता ही नहीं है. एक राजा थे महाराज चित्रकेतु. महाराज चित्रकेतु के पास बहुत ऐश्वर्य था. He had very much power, prestige. But only thing he was lacking was he had no child. That is happiness actually. Having a child is happiness. So महाराज चित्रकेतु के पास सब कुछ था लेकिन बच्चा नहीं था. तो उन्होंने नारद मुनि इनके पास आए, उनको कहा कि मुझे बच्चा चाहिए, आई वॉन्ट अ चाइल्ड. उन्होंने कहा आपके भाग्य में बच्चा नहीं है, कितना भी करो बच्चा नहीं है. बोले नहीं, आपको मुझे बच्चा देना ही पड़ेगा कुछ भी करके. ये देखिए आपके भाग्य में बच्चा नहीं है, नहीं कुछ भी करो मुझे बच्चा चाहिए. ठीक है, अभी आपके भाग्य में नहीं है लेकिन आपको चाहिए तो मैं आपको बच्चा देता हूँ. उसका नाम मैं देता हूँ हर्ष शोक. क्या देता हूँ? शोक. हर्ष शोक बच्चे का नाम. और राजा बहुत खुश हो गया, बच्चा हो गया. और इस रानी को बच्चा, बहुत सारी रानियां थी, उसमें से एक ही रानी को बच्चा हुआ, उसका नाम हुआ हर्ष शोक. राजा पूरा दिन भर बच्चे के पीछे, मॉर्निंग टू इवनिंग ही वॉज स्पेंडिंग ऑल हिज टाइम फॉर द किड. ही वॉज नॉट स्पेंडिंग टाइम फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, no time to anybody else, only Harsha Shok, that is was his life. But then all other queens who never had a child, they felt neglected. So they decided that they're going to poison the child. Because of the child, the king is not paying attention to them. So they poisoned the child and killed the child. And then the king became depressed. He became mad actually. He became mad. He lost the mental balance. He had to be mental case. Why? जो नसीब में नहीं था और उसको जबरदस्ती खींच के लाया तो और भी प्रॉब्लम. जो नहीं है वो नहीं है. किसी के भाग्य में है उसको देख के हम हमारा भाग्य नहीं बदल सकते, है ना. They say that God knows everything. He will give you what is right for you and he will not give you what is not right for you. So do not think that others have, so I should also have it. Only thing which is there here is आपके कोटे का आपको मिलेगा. तो क्या करना चाहिए? जितना समय है उसका तो सदुपयोग भगवान की सेवा के लिए, भगवान को जानने के लिए. क्योंकि देखिए आप समाज सेवा करेंगे, देश की सेवा करेंगे, इसकी सेवा उसकी सेवा, तो पुण्य मिलेगा आपको. लेकिन भगवान को जानने का जो तात्पर्य है वो उससे नहीं मिलेगा. हमारा मनुष्य जन्म क्या है, या बाकी सब सेवा तो करनी है, उसके साथ भगवान को जानना बहुत जरूरी है. जब आप भगवान की सेवा करेंगे तो सभी सेवा उसमें आ जाती है. जैसे कि आप भोग लगाते हैं भगवान को और सबको प्रसाद खिलाते हैं, तो आपको सेपरेट पार्टी रखने का जरूरत नहीं है. आप हर हफ्ते पार्टी रख सकते हैं. क्यों? आप भगवान का प्रसाद कर रहे हैं, आप अपने घर पे कोई अच्छा भगवान का कार्यक्रम रखिए और हर हफ्ते रखिए, आप पार्टी रखिए और सबको खाना खिलाइए. सब आ गया क्या? नहीं, उसमें गाना भी आ गया, खाना भी आ गया, मिलना भी आ गया. लेकिन आप अलग पार्टी करेंगे तो कितनी पार्टी कर पाएंगे साल में? 1, 2, 5. लेकिन भगवान के नाम से आप हर हफ्ते कुछ ना कुछ कर सकते हैं, है ना. तो ये जब भगवान की सेवा आ गई तो उसमें सब कुछ आ गया. जैसे कि भगवान सेवा में सब कुछ आ गया, मनुष्य सेवा भी आ जाती है. जैसे कि हम फेस्टिवल करते हैं, फॉर एग्जांपल हम फेस्टिवल ऑफ इंडिया करते हैं, तो हम इतने सारे लोगों को प्रसाद देते हैं, है ना. तो हम एक्चुअल में किसके लिए कर रहे हैं? जगन्नाथ जी के लिए कर रहे हैं. लेकिन फायदा किसको हो रहा है? सबको हो रहा है. जगन्नाथ जी के दर्शन हो रहे हैं, प्रसाद मिल रहा है, लोग एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, है ना. तो अकेले ऐसी पार्टी करके देखो, हो सकती है क्या? नहीं हो सकती. एक बार करेंगे साल में, 10 साल में एक बार कर पाएंगे आप, हर साल नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा नहीं है.
जहाँ स्वार्थ है वहाँ परमार्थ नहीं हो सकता है। जब आप कोई भी कार्य भगवान के लिए करना चालू करो, सबकी सेवा। देखिए, आप जब एक पेड़ को पानी डालते हैं तो कैसे डालते हैं? उसके मूल में पानी डालो तो हर एक पत्ते को पानी मिल जाता है। तो मूल कौन है सबका? भगवान है। तो भगवान की सेवा करेंगे तो देश की सेवा। जैसे प्रभुपाद जी ने अमेरिका आके भगवत गीता का प्रचार किया, भारत की भी सेवा हो गई। आज भारत का नाम दुनिया में रोशन किसने किया? प्रभुपाद जी ने। ये भारत रत्न से भी आगे है प्रभुपाद जी। हर एक देश में जाके भगवत गीता का प्रचार करना कौन कर पाया? जिसके पास मिलियन डॉलर थे वो भी भगवत गीता का प्रचार नहीं कर पाए, वो प्रभुपाद जी कर पाए। 108 से ज्यादा मंदिर बनाए भगवान कृष्ण के, अमेरिका में जाके, रशिया में जाके, यूरोप में जाके। टाटा बिरला ने भी नहीं बनाया एक मंदिर। क्यों? किसकी सेवा हो गई? भगवान की सेवा तो हुई, देश की भी सेवा होगी। तो देश का, भारत देश का नाम आ गया, आ गया है ना। तो देखिए, जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है। देखिए, प्रभुपाद जी ने जब भगवत गीता पर प्रचार किया तो कितने सारे ड्रग एडिक्ट्स ड्रग छोड़ के भगवान की सेवा में लग गए। हिप्पीज थे तभी। बड़े बड़े डी एडिक्शन सेंटर्स भी जिनको ड्रग नहीं छुड़वा पाए, उनकी ड्रग्स भगवान प्रभुपाद जी ने छुड़वा दी। तो शिकागो के मेयर, उनका इंटरव्यू लिया प्रभुपाद जी का, आप इंटरव्यू पढ़ सकते हैं कि आपने ये कैसे किया। कैसे किया प्रभुपाद जी ने, बताइए? भगवान के थ्रू ही किया ना। तो आप जब भगवान की सेवा करते हैं तो उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें कला भी आ जाती है। जैसे हम फेस्टिवल होता है तो क्या होता है, आर्टिस्ट लोगों को बुलाते हैं, आर्टिस्ट लोगों को भी पैसे मिलते हैं, उनको भी आर्ट, लोग आर्ट देखते हैं, भरतनाट्यम देखते हैं, कथक देखते हैं। हाँ, तो किसकी सेवा हो गई है? भगवान की सेवा में सब कुछ आ गया। उसमें म्यूजिक भी आ गया, फूड भी आ गया, एंटरटेन भी आ गया, पैसा भी आ गया, उसमें सब कुछ आ गया। डोनेशन भी मिलता है मंदिर को, है ना। ऐसे अलग डोनेशन मांगने जाओ तो कोई एक पैसा नहीं देता है, लेकिन फेस्टिवल के हिसाब से थोड़ा लक्ष्मी भी आता है नारायण की सेवा में। तो जैसे भगवान की सेवा है उसमें सभी सेवा आ जाती है ना। जैसे कि हॉस्पिटल्स, अभी भारत देश में कितने सारे हॉस्पिटल्स मंदिर वाले बना रहे हैं। जैसे इस्कॉन का हॉस्पिटल है, जैसे हमारा ये मंदिर बना तो जगह है तो हमने यहाँ पे एक हेल्थ सेंटर चालू कर दिया, योगा सेंटर है यहाँ पे। मंदिर है तो योगा है, हमने योगा के लिए नहीं किया है सेंटर, लेकिन यहाँ पे लोग दिन में, हफ्ते में कम से कम 60 लोग योगा के लिए आते हैं। 60 पीपल कम्स ट्वाइस अ वीक फॉर योगा क्लास। सो हु गेट्स बेनिफिट? हाँ, लेकिन भगवान की सेवा है तो सब कुछ आ गया उसमें। हाँ, तो कृष्णा तृप्त जगत तृप्त्या। अगर आप भगवान को तृप्त करेंगे तो सब लोग अपने आप ही तृप्त हो जाएंगे। लेकिन हर एक को अलग अलग तृप्त करने का सोचे तो इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। देखिए, यहाँ पे मंडे से थर्सडे तक सुबह 10 से 2 बजे तक फर्स्ट नेशन के लोग आते हैं, हाँ, नेटिव्स। सेवन्थ फायर करके उनका ग्रुप है, वो आते हैं। तो उनके पास जगह नहीं है, द फर्स्ट नेशन कम्युनिटी हैज़ नो स्पेस। So they approached me, they said, we need a space because we have some kids and we want to educate them. I said, you're most welcome, use this space, you won't worry about anything else. So Monday to Thursday, 10 to 2, we have 7 kids from the First Nation coming here and taking education, and we give them prashadam also. है ना? तो इसमें क्या आ गया? भगवान की सेवा में सब कुछ आ गया। बच्चे भी सीख रहे हैं, योगा भी आ रहा है, प्रसादम भी हो रहा है, कुछ लोगों को हेल्थ केयर सर्विस भी मिल रही है, और साथ में भगवान के दर्शन तो हो ही रहे सबको, है ना। तो ये है भगवान की सेवा में सब कुछ आ जाता है। ये इसका मेरा अनुभव मैं शेयर कर रहा हूँ, प्रभुपाद जी का अनुभव है। तो आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, समझ आ रहा है। जैसे कि हमारा ये सेंटर है तो लोग इसको जानते हैं कि ये इंडियन लोगों का सेंटर है, भारतीयों का है। जब फेस्टिवल इंडिया होता है तो किसका नाम होता है? भारत देश का नाम होता है। जैसे आज हमारी कम्युनिटी है तो हमें, हम जब फेस्टिवल करते हैं तो हमें ये लोग रिस्पेक्ट क्यों देते हैं कि वी आर नॉट पैरासाइट्स इन दिस कम्युनिटी, वी कंट्रीब्यूट समथिंग, वी गिव बैक थ्रू द फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स। 2 days of festival contribute $1.2 million to the city of Thunder Bay. How many? $1.2 million. How? Because so many people come, so many vendors make the money, city makes the money, artists, hotels. Last year, city of Thunder Bay
They have an organization, CDEC, CDEC. They did survey of all the hotels. How many people stayed in hotels in Valentine, Prince Arthur, different hotels? They gave us a code, and we displayed this code on our website. And then after the festival was over, we approached all these hotels, and we said, how many people stayed in your hotel with this code? Can you imagine how many? 150 nights were booked every day for 2 nights with this code. 150 nights. So many hotels got the money, and they calculated everything. It was $1.2 million. From the hotels. It is nothing related to vendors. So many vendors make money. So many artists, so many people are there. Even city makes money. But ultimately, who is served here? Krishna is served. You understand? So Krishnam Tripte, Jagat Tripte. है ना? तो अगर हमारा जीवन हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो सब कोई सुखी होने वाला है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है. देयर इज नो शंका है. सो हियर प्रभुपाद जी यहाँ पे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सुखम ऐन्द्रियकम दैत्यम देह योगी न देहिना. आपके जीवन में सुख दुख आते रहेगा, लेकिन क्या नहीं आएगा? भगवान की सेवा का मौका कभी नहीं आएगा. ये एक ही, क्योंकि जानवर को भी दुख होता है, जानवर को भी सुख होता है, मनुष्य को भी सुख है दुख है. तो व्हाट इज डिफरेंस? कोटा है तो मिलने वाला है. जो नहीं मिलेगा आपको वो भगवान की सेवा की अपॉर्चुनिटी. हाँ, और भगवान की सेवा कैसे करेंगे? नाम स्मरण. हाँ, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So, Srila Prabhupada ji recommended. एक्चुअली में शास्त्रों में लिखा है कि रोज 3 लाख बार भगवान का नाम लेना चाहिए. कितनी बार? रोज 3 लाख बार, 300,000 टाइम्स. ऐसा शास्त्रों में लिखा है. लेकिन इतना तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 लाख बार नाम लेना है तो कितना टाइम लगेगा? 20 घंटा लगेगा. हाँ. तो प्रभुपाद जी ने हमें थोड़ा कंसेशन दिया है कि हमें ये जो माला है ना, जपमाला, इससे रोज 16 राउंड करने चाहिए. 16 राउंड करने के लिए कितना टाइम लगता है? 1.5 से 2 घंटा लगता है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ यू डू इट. 2 घंटा तो कम से कम भगवान के लिए निकालना है. अगर आप कहेंगे 2 घंटा तो बहुत ज़्यादा होता है, हमारे पास 2 घंटा सोने के लिए भी नहीं रहता है, खाने के लिए, तो ठीक है, आप आधा घंटा निकाल दीजिए, हाफ एन आवर. आप कहते हैं आधा घंटा भी नहीं है, ठीक है, 15 मिनट निकाल लीजिए. एक राउंड करने के लिए 15 मिनट लगता है. कितना? ज़्यादा नहीं है. लेकिन ये जानवर कोई नहीं कर पाएगा. कोई डॉग को आप बिठा के जपमाला नहीं कर पाएंगे. सिर्फ मनुष्य जीवन में ही हो सकता है. तो अगर किसी के पास जपमाला नहीं है तो आप मंदिर से खरीद सकते हैं, और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है. जपमाला के साथ एक बैग भी आता है, तो बैग भी रखना जरूरी है. इसको कहते हैं टूल्स. टूल्स यानी इक्विपमेंट्स. If you are doing gardening, our Rob is a friend, is a gardener here. If you are doing a gardening, you need the tools, right? If you don't have a tools, then you can't do the gardening. Similarly, if you don't have Bhagavad Gita, if you don't have माला, तो आप कहाँ करेंगे? आप नहीं कर पाएंगे. इसलिए आप जपमाला करिए, और रोज आधा घंटा तो कम से कम करिए प्लीज़. और महीने में एक आध बार सुबह जल्दी आइए मंगल आरती में 7 बजे. हाँ, और यहाँ पे आके हमारे साथ जपमाला कर सकते हैं आधा घंटा. हर वीक में बताता हूँ, सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि महीने में एक बार आइए सुबह जल्दी, हफ्ते में एक बार कभी जब है तो, या बर्थडे के दिन तो आ ही जाइए सुबह 7 बजे. तो हम 7 से 7:30 आरती होती है, 7:30 से 8 रोज जब करते हैं हम बैठ के साथ में. तो आपको फिर 8 से 8:15 तक हम तुलसी आरती करते हैं, और 8:15 से 8:30 भागवतम, और फिर 8:30 को प्रसाद. तो आप हफ्ते में एक बार सुबह जल्दी आइए तो बहुत अच्छा रहेगा. ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? थैंक यू सो मच. सो विल डू द आरती सेरेमनी. रिक्वेस्ट एवरीबडी टू ज्वाइन अस फॉर द आरती. खड़े हो जाइए, भगवान के नज़दीक आइएगा. इस साल का जो फेस्टिवल है वो 22 और 23 जुलाई को है. जैसे हमने फेस्टिवल की बहुत बात की आज,
तो 22 जुलाई को फेस्टिवल ऑफ इंडिया है, 23 जुलाई को फेस्टिवल ऑफ कलर्स है। आप सब जरूर से जुड़िएगा, एवरीबडी इज इनवाइटेड। हरे कृष्णा। श्रील